the sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them, there were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to even picture it, 'cause my reality ain't your reality, no. The sins that you can't confess. I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them, there were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to even picture it, 'cause my reality ain't your reality, no.
Practically physics processing using internal formula. Did your heart stop when you first saw me? Did your world stop spinning? Does your world revolve around me? Me too. I'm cutting dice. Look at these eyes. They're not here to please you. There was a time you could be mine before all that you put me through. I knew that you were trouble, but I didn't think you were bad. I'm living in this bubble and it makes you so mad. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I
been chilling, watching the ocean with you. Baby up with a slow motion crew. And we up in our clouds when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change. एक सेकंड ना वॉइस मैं जरा मेरे को इंस्टॉल करना अभी इंस्टॉल नहीं किया आई वाज प्लेइंग एपेक्स दिखता है इधर से वही बोलने वाला था मैं दिखता है इधर से करके प्लेइंग एपिक्स देखा रुक मैं ये लगाता है ले मी बॉट नथिंग फाउंड है अरे भूसड़ी के इसको पूरा प्लेलिस्ट दिया नथिंग फाउंड क्यों बोलता है ये What the fuck? Shit, copy. Nothing found. दूसरा कौन सा बॉट है दूसरा कौन सा थ्रेड बॉट वाला है थ्रेड बॉट को कैसे करें सेमीकोलन प्ले एंड देन द लिंक हाँ हो गया 260 सॉन्ग्स गिट इंस्टॉल करो पाइथन इंस्टॉल करो आईडी इंस्टॉल करो terminal pip install -r requirements.txt you're using could not find okay pip install -u pip इंस्टॉल गेट ये पिप का बहुत लफड़ा रहता है बाबा कभी कभी अपडेट ही नहीं होता है लगाई मेरे को नो let me open the terminal Pythonm with तो हाँ ये इधर भी स्ट्रीम करना इधर भी स्ट्रीम करो डबल स्ट्रीम करो डिस्कॉर्ड में डिले या फिर उधर डिले रिड्यूस कर डिले बंद कर देता उधर का मैं उससे अच्छा रुक जरा OBS फाइल सेटिंग्स एडवांस डिले डिसेबल्ड ओके डोंट शो टिप्स क्लोज ये क्या हुआ बे install -r read me नहीं clear install -r requirements.txt उससे एरर थ्रो करेगा could not find a version that satisfies torch requirements.txt में जाके वो टॉर्च का सामने का वर्जन डिलीट कर दे टॉर्च ही नहीं है पाइटॉर्च है वो इसलिए पाइटॉर्च नहीं तो किधर है requirements.txt है टॉर्च तो भी टॉर्च नहीं could not find satisfied torch माता PYPI ओपन हो जा not this ये क्या नाम है nope install pip install torch तो व्हील फाइल से करना पड़ेगा जो मेरे को करने का नहीं है
then I tried this. Solutions. If you want a GPU enabled, then GPU plus CPU. If you want GPU enabled, okay sir, let's try this. No. क्या एरर थ्रो कर रहा है मेरे को It's pause not करना able to. पड़ेगा। It's not able to find torch, bro. Basically, if you see this, it's not able to find. पिप को अपग्रेड करके देख। Pip install minus u pip. Already satisfied. could not find the torch equal to 1.5.0 निकाल दे खाली टॉर्च पे वही किया मैंने, देख। फिर भी नहीं ना, could not find. Could not find the versions, no matching. Did you solve it? It seems to be it seemed to be the version of 64-bit. Try installing Conda, also works better. Oh, Anaconda is actually better. I agree with that. 32-bit of Python. Do I have a 32-bit Python? I don't think I have a 32-bit Python. Services. Yeah, Python. Python का सर्विस ही नहीं है, प्रोसेसेस। अच्छा पाइथन का ओल्ड वर्जन 3.6 सेट करते हैं। It's 3.7 bro right now. हाँ वो 3.7 में लफड़ा देगा बोलता है कि पाइथन is too new. But 3. अरे latest one is 3.10 bro. It should work. Okay, make sure to install 64-bit Python. 64-bit का ही है बे। Shit, okay. Shift. अरे PowerShell नहीं रे बाबा। What the fuck do I open? Okay. CMD command prompt run as administrator. Yes. CD. Paste. Pip list. Pip install minus u pip. Oh shit, sorry. Python dot. Oh, where are you going? Change directory क्यों नहीं चला बे? Change directory. What? CDD. Not able to change directory only. क्या पड़ा है भाई? This is why office laptops are better. Change directory CDD Justin. ये भाई क्या है? Nope. Is my this thing pointing to a bloody interpreter settings? Are you pointing to a virtual environment, you bloody bastard? Yeah. That's why you fucking up, right? Let's go to C drive, let's go to user, let's go to Python project, virtual environment, script. CMD, git list, git install minus pip. It is satisfied. Pip install torch. How the fuck do I check my Python? Is 64 a bit. Python 3.7 32 bit है। Nice, yes, okay.
let's go to 64-bit then. Window X control panel. इधर से कंट्रोल पैनल निकाल दिया क्या लोगों ने? Install program Python uninstall. Yes. Lag delay गया ना Alex? Slight delay, but ठीक है. वो आई थिंक वो बेस डिले रहता ही है. तो पूछेगा सर. Python कोई बात नहीं. 3.7 64-bit. तो currently मेरे स्क्रीन में uninstall पर पूरा था. Okay, I have already came back to the this thing. Okay, तो डिले है. Okay, 64 है इधर लिखा हुआ. हाँ, this is what I want to save. Where the fuck is this thing? Close. Where is control panel? It removed everything. Python launcher uninstall. Yes. Yes. Installed. You open. ठीक है. Install now. Yes. मेरे खुद के सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर रह के एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन रह के मेरे को एक बार एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस दे बोलता है वो. Special thanks to Mark Hammond, without whose years of freely shared Python and Windows should not be DOS. Okay, sir. Thank you, Mr. Whatever your name is. Windows C program files x86 में रहेगा वो. हाँ? Fuck this shit. Go to Python. Okay, I know, bro. Change here settings. Interpreter, show all, remove this, add a new one. Yup, okay. Sorry, not this one. Just switch, bro. Honda environment के तरह set कर. वही करने वाला था मैं. Compile location. Okay, I found it. Scripts cmd pip install -u pip. अब एरर देगा एडमिनिस्ट्रेटर का. could not install. क्यों भाई? Already satisfied बोलते. Install torch. Cancel. Now it works. Bloody idiot. Okay, where the fuck was it? See Windows System 32 नहीं रे bro. Kushal Patel app data local programs Python. Okay. Close user Kushal Patel. Okay, let's go now. Let's search up and copy. Say make available to all projects. Okay. आप लैग नहीं आएगा. ठीक है. टर्मिनल इसको अपन लोग रिवर्ट कर सकते हैं ना. pip install -r requirements.txt. No module named encodings. What the fuck is encodings?
Oh, I know what is happening. Close this. Go open a new terminal. If install minus requirements. Does not exist. So users Pythonm projects. बराबर है तो ये. अरे 1 मिनट अब नहीं है 13 साइज का क्या है well 11 yellow one is last yellow one जी Interesting. Okay, इधर है install requirements. Install. Was already सब setup है Alex. मैं गेट और बेस सी कनेक्ट कर रहा है. कनेक्ट क्यों कर रहा I just मैंने एक done Okay. nothing. मैंने एक लिंक भेजा है ना getting started with YOLO. Yeah. That is a very simple thing. Predefined ML model that you can use to do object detection. Some sort of object detection using image processing. Testing a model pre-trained on Coco. It is super convenient to initialize the network and load pre-trained weights. Okay, so network is the thing that is already actually pre-trained weights are the weights that are telling it to define everything. Oh boy. Holy shit, the training is such a big one.
we can use detect.py directly, or we can basically load a image of Zidane, and then load the model and run it. Okay, file, new project. Learning YOLO. Here one. V1.0. Oh. Window. Control Shift F10. हैं? Control Shift F10 क्या रही है? Defender might impact. Exclude directives. चल अभी तक इंस्टॉल कर रहा है. इंडेक्सेस अपडेट हुए कि नहीं थे? हुए थे. Shift F10. हाय Pythonm. करना. Break निकाल, paste कर, control shift F10. Command. Oh. What if I change this to a शटरस्टॉक से इमेज डाउनलोड करेंगे पर्सन्स का और देखते कैसा चलता है. Officer web file. I don't need a fucking web file, bro. तो लिंक्स कहाँ भेजा है? जनरल चैट में. एनालिटिक्स विद्या. बात एक ही नाम. Hey, what's detect? Nice. So they have trained persons data sets. What person data set train किया वो लोगों ने? Okay. What does results.show? What does results have? Model.image. Model is pytorch.load ultralytics YOLO v5. v5l में क्या है? Not found. Yum. Not found.
This thing has got better accuracy. Let's learn about this. I don't need just a pre-trained model. Okay. Now initial powerful network parameters pre-trained on cookie for interested in person detection device sufficient, but most cases interested training around customers. Prepare MV for standard darknet formation for annotation. So if you are familiar with this format, you can just skip this section. However, if not, let's see how to put annotations files. YOLO is a normalized annotation file. Annotations are given a relative to the image size. It means annotation will be range of 0 to 1 and take 100% of the image size. For every image, we need to corresponding .txt file. Why the fuck do you need txt file? Why can't you work with JSON files? You should have a file name text editor and annotated boundary. But especially the names are antique, otherwise it will be skipped or not included in the this. Every annotation file should in the following ways. Label, okay, that is defining x, y, width and height. Okay. Center x or y ले रहा है वो. Okay. ये लोग ऐसा कर रहे हैं क्या? Top left right and bottom left right. Top left and bottom right नहीं ले रहे लोग. The folder structure should be in the following order: data set, train. Okay, let's create that thing. Hey, 3 minutes back. What the fuck do you want, bro? You want smaller? Do you want small? Yep. Hello. क्या कर रहे हैं अभी? I am just creating the data set with images and labels. Okay. So I'm trying to download a data set for car detection. Let's see if car detection works. I need data set, bro. Download data set. Yeah. Download car data set. Image चाहिए ना? हाँ? Image चाहिए ना? Images चाहिए. Group में डाला. तेरे पास है? General. मैंने वही खोला अभी. वो उधर बहुत सारे डेटा सेट था. Training images can be downloaded here. बस सारा training images आएंगे, labels नहीं आएंगे ना इनके. खोल बे लिंक. तो क्या कर रहा है? तो डिटेक्ट कर रहा है कि First train करेंगे ना. Let's try to train it and see ना how we can get it trained. Because you see, in my application, I actually will have training data set with me. Okay, because I'm doing it manually. Okay. I just need to train the algorithm for my particular case. So I had done this experiment once, okay, where क्या हुआ? YouTube खोल रखा है मैंने. No wonder. YouTube mute कर देना. YouTube mute कर देना. हाँ. तो the point is, मैंने एक बार एक pre-trained classifier लिया, ठीक है. उसमें मैंने एक डेटा सेट डाला. वो डिटेक्ट ही कर नहीं पा रहा है because एक तो रेजोल्यूशन डिफरेंट था. On what it was trained on 1080. This was recorded at 4K. Then that was in color. This is in black and white. वो तो होएगा ही. है ना? So that is the thing. So now कौन सा ट्यूटोरियल फॉलो करा? मैंने अभी मैंने medium.com का, not analytics विद्या का, medium.com का है देख. Getting started with YOLO and frineds.
ये टी zipped क्यों है भाई? जी zipped है ये। वो खुल डबल जाएगा। हाँ नहीं वो ट्रिपल जिप है, बहुत बड़ा खुलेगा। file। प्रॉब्लम क्या है? डॉट मैट फाइल्स है। I want images and labels. Description of the लेबल भी चाहिए। हाँ लेबल फाइल्स भी चाहिए ना, डॉट txt फाइल्स। ये दिया, इसने दिया नहीं गया था कुछ। Within the folder of the images. इसमें images folder ही नहीं है बे लौड़े। क्या करूँ मैं? Okay, all images. A tar zip is here. Okay. पर ये डाउनलोड चल ही नहीं रहा है बे लिंक का। क्यों नहीं चल रहा है रे? This shit ain't working, bro. Kaggle. One second, ना मैं डोर बंद करता हूँ। 2 GB है। क्या क्या इसके अंदर? डॉट मैट फाइल है। डाउनलोड। फ्री में कुछ तो दे दा। कुछ तो फ्रामा दे फ्रामा। I want something in free. I will just try to do a simple thing. I'll just create a. I want to find it. Okay. I want to extract files. Okay. Let's see. Wow, bro. ऐसा नहीं करता है। मैं कॉफी बनाया वैसे ही है। क्या कॉफी बनाया वैसे ही रखा? हाँ मैं इधर सब इंस्टॉल करने में लग गया। कोल्ड कॉफी अभी। Oh, fuck you guys. What is this? तो टेम्पररी 2-3 इमेज डाल के टेस्ट कर। मैं वही करने वाला हूँ। मैं खुद का ही इमेज डालने वाला हूँ। कार्स 2-3 कार्स है और फिर वो क्या पैसा उसमें आएगा आपको पता है, वैसे ही डालते हैं। ट्रैफिक डालते हैं। कार्स के बदले ट्रैफिक डालते हैं। ट्यूटोरियल ओके यू वांट ट्रेन लेबल्स इमेज वन मोर टेक्स्ट इमेज वन टेक्स्ट में क्या रहेगा? क्या? वो लेबल फाइल में टेक्स्ट फाइल्स है, वो टेक्स्ट फाइल्स के अंदर क्या लिखा है? Okay, so there will you will have a class defining the type of object. Then you will have its center x, center y of the 2D bounding box. Correct? So if you open it in Paint and show it to you, one second. So like this is your image, right?
This is your image. उसके अंदर you have a object of interest, correct? And now you will draw a bounding box. This bounding box will... हाँ? कुछ नहीं, continue, I'll tell you. हाँ. So now this is your 2D bounding box. This 2D bounding box will be in your text file in this format. It will have a class, the center X, center Y, width and height. Okay, so class can be sedan. Center X में भी नहीं, for example इसका center क्या है? इधर है पे 605 by 302. 605 and 302 and width assuming 100 by 100 hai. So each of the text files will have this for each image. Now you can have duplicates of this. How many red boxes are there? That many things you will have. And each of this is basically telling the from what I understand is basically your training algorithm will take a cropped image now. It will only have this much in it, and it will learn it will do image processing on it. It will learn the edges, and then it will learn other things like RGB values kya the, all these. It will learn. It will create its own understanding learning. I mean, what it creates, I want to learn from this understanding. So even when you're generating output also, you just it will basically try to find this much only in an image. It will take this entire square. It will take this square and it will try to match it. Or यहाँ match हुआ तो ये this is a value and it will return this value then. वैसा चलता है वो. Anyways, so those are the points. Let's see. उतना मुझे समझा. Now I don't know how much of it is, how and why it does it. Zero, 1, save. Now we will open. Okay, now we will go to the drive, learn with it, data set, images, delete. Don't save. Now you for example, let's try to detect ठीक है 167 by 158 हैं. What the fuck is this? ये कार में बहुत कार्स है भाई. तुम बहुत ऐसा ही करते हम लोग like manually when we do it, right, Alex, in our projects we actually do it like this itself. ना ये दोनों में डिफरेंस क्या है, किसको पता है? दिख रहा है क्या बॉटम लेफ्ट का? जब तक पॉइंट करेगा तब तक बहुत टाइम लगता है. अभी मैं रुका है उस स्ट्रिंग में आने. 167 by 158 and 612 by 408. Now which is width and height, which is what, I don't know. रुक जाओ. Let me see. I change it. Okay, the left. Okay, I got it. The 612 by 408 is the image. The 167 by 158 is the this thing. So इसका सेंटर कैसा निकालूं मैं? रुक बाबा. We will use a annotation tool. Free annotation tool. 21 annotation software. 5 best annotation. Features नहीं रे बाबा. Image annotation tool. Image lab. What the fuck do I access IMG lab? Visual object tagging. IMG lab. Multiple label types, point, circle, bounding box. Maybe next time.
Cookie policy, I don't care. How the fuck do I open an image? Okay, I go to D, learn with us, datasets, sampling, train images, all files. Can you open, sir, please? What did I do? Open images. पैसा चलता रहा तू. ओके अपलोड हाँ अभी आया rectangle. Now you draw a bounding box here. That is one bounding box. You will draw another bounding box for this car. Oh, unlabeled category car. Label name sedan. Okay. Category truck, SUV. No, category car. Whatever. Now, how do I save this shit? Save. Coco Jason. नहीं कोई रुक. Coco Jason save करते हैं. Save. Train labels. Save. Now if I come here, open my labels file, I'll have a notepad plus लगेगा मेरे को इसके लिए. Notepad plus download. Make apps, not war. D drive software. Say yes. Okay, next. I agree. Next. Next install. Yes, please run. Don't care about this. Open a new one. Place this. Watch. Open this. Okay, now I can format this. JSON formatter. So you have the image name, type is instances, you have the annotations, image, you have segmentation that is telling the oh shit, left, right, okay, area, bounding box. कौन सब्सक्राइब किया भाई? कार्तिक पाटिल, बहुत दिनों बाद सब्सक्राइब किया भाई तो मेरे. हाँ कार्तिक, हेलो. अभी भी शतक दिखा रहा है. वो अपडेट होगा तेरे तरफ. ये अपने कर दिए. मैं हाँ, बीच में वही बोल रहा था कि अब सब्सक्राइब नहीं किया करके. क्या बोलने का मतलब? कैसा दोस्त है नहीं. क्या नहीं बरोबर बोला देख. एक मिनट रुक, टेक्स्ट फाइल बनाते हैं. समय को लगा कोई और कार्तिक रहेगा, मतलब अपना कार्तिक तो किया ही रहेगा. तो ये देख क्या बेसमेंट जैसा बोल रहा, नहीं किया. I don't need this. I don't need this. I need this. I don't need this. I don't need this. I need that. I need that. I don't need this. I need this. Okay, so what the fuck do you want in this? So you want it to be like this. So एक टेक्स्ट फाइल खोलना है, इसमें सेडान डालना है, सेंटर x सेंटर y निकालना है, x1 प्लस विड्थ डिवाइडेड बाय 2. क्या है भाई इसका विड्थ?
जायचा गो एक्स वाय कुठल्या ह्याच्यात एक्स वाय काय हो ठीक आहे पण plus 159 404 I'm getting 404 yeah I'm getting 404 so it is xy width and height 159 so you have 159 153 249 the width and height I need to get the x image width okay क्या था भूल गया वापस ओके तो ये बोल रहा था क्या क्या बोल रहा था सेंटर एक्स सेंटर वाई विड्थ एंड हाइट पर प्रॉब्लम क्या है बोलते हैं स्टॉप लेफ्ट कॉर्नर नॉर्मलाइज्ड वर्जन से ठीक है वो समझा Give your software sense of sight. RoboFlow. Annotate. Train. Annotate. Images super sight. What the fuck? I don't want to RoboFlow. You just have to run the train.py model. So before that, we have to create the data set to create. ये यूलोप 5 का रिपॉजिटरी क्लोन किया गया हाँ so the first thing you do is this तो अगर अभी तू git का कमांड वापरने वाला तो git से कर मैंने पाइथन में सीधा vcs डाल के मैंने चेकआउट किया git
टूल्स किधर गया भाई ये किधर रहता है बाबा वो VCS का क्या VCS operations you can check out from your VCS operations. How the fuck do I create my data set? There's one jugaad I can do, but I don't want to do it. अगर ये चलता ना मेरे को डेटा सेट डाउनलोड करना है बस सिर्फ just custom pre-annotated car data set with labels. TensorFlow datasets. How the fuck do I do this? ओके कार डेटा सेट HTML हाँ इसमें अबे डाउनलोड नहीं होता भाई इसका डाउनलोड हो रहा है ये लिंक ट्राई करो एक बार वो एलेक्स ने जो लिंक भाई कैन आर यू एबल टू डाउनलोड द इमेजेस देयर Yeah, we're setting. यू सेंड दैट AI स्टैनफोर्ड का लिंक जनरल चैट में तुमने जो भेजा AI स्टैनफोर्ड का लिंक I'm not able to download the training images. It's not fucking. Hey, tester, testing करके दे बे. आपने वो 934 MB है इसलिए क्या करना है? 1 घंटा अबे एक वो एलेक्स ने जनरल चैट में ये भेजा है देख AI स्टैनफोर्ड का लिंक उसमें वो लिंक है टेस्टिंग इमेजेस कैन बी डाउनलोडेड हियर वो लिंक नहीं चल रहा है क्या हुआ Why is that link closing automatically? but the file was redirected to insecure connection but download has been blocked okay console में वो बोल रहा है कि it was served through AI स्टैनफोर्ड साला अनसिक्योर है ना हाँ ना अरे नहीं भी secured है कनेक्शन इज सिक्योर सर्टिफिकेट है उसको सर्टिफिकेट वैलिड है उसका तो नॉट सिक्योर होता है ट्राई डिफरेंट ब्राउज़र ब्रेव से ट्राई किया क्या ब्रेव से ही ट्राई कर रहा हूँ मैं कब से एक काम कर क्रोम से ट्राई करता रुक मैं क्रोम से डाउनलोड हो रहा है बट वो बहुत बड़ा है हाँ दैट्स फाइन वो बड़ा रहने दे हाँ तो क्रोम से ट्राई कर क्रोम से भी नहीं हो रहा है क्रोम में भी सेम एरर क्या आ रहा है like it's not able to serve that file basically connection नहीं हो रहा है वो has been blocked ये दबा के देख तो ठीक है ना डाउनलोड फ्रॉम अ डिफरेंट थिंग कहां बस वहां से थोड़ी डेटा सेट मिलेगा अरे प्रॉब्लम क्या है ठीक है आई एम दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फाइंड डेटा सेट्स सोर्स कोड नहीं चाहिए भी मेरे को डेटा सेट फ्लो टेंसर फ्लो का ही देख रहा हूँ वो इट इज redirected to that only that AI स्टैनफोर्ड का लिंक only हाँ सब पे वही है स्टैनफोर्ड का डेटा क्या revisiting a public vehicle odometer for computer vision towards data science Kaggle I've opened that उसमें भी नहीं है सेम लिंक है Kaggle वाले में पर Kaggle में वो बोल रहा है गूगल ड्राइव से कर बोल रहा है ना वो Kaggle से हाँ देख ना इधर देख वो Kaggle जेसन लोड कर रहा है माउंट ड्राइव कर बोल रहा है एंड देन डेटा सेट डाउनलोड कर बोल रहा है वो डाउनलोड 2 GB या साइन इन विद गूगल या हाँ कर ले डाउनलोड 2 GB में वही करता हूँ मैं ही जरा बाजू में लेके जाके साइन इन विद गूगल कौन है अभी उधर भैया भाभी हैं अभी भी ना भैया भाभी कब के गए तू कब आ रहा है बेलगाम मैं तू कब आ रहा है बोल नेक्स्ट वीक का प्लान कर रहा था ठीक है फिर मैं नेक्स्ट वीक आता
ऐसा भी ओके। बाय द वे वो जो मेरा बाइक का TFT बन चालू हो रहा था ना, तो मैं गया 1 वीक मेरा बाइक बैंगलोर के KTM सर्विस सेंटर में था, ठीक है। तो वहाँ से वो लोगों ने बोला कि आपका क्लिप टूट गया वायरिंग हार्नेस का विच कनेक्ट्स टू द TFT डिस्प्ले, वी हैव टू रिप्लेस इट। आई सेड ओके, कैन गेट टू रिप्लेस। कितना नहीं वो वारंटी के अंदर, मेरे पास 5 years वारंटी है, ठीक है। तो वो पहले बोला कि मैं ऑथराइजेशन लेता हूँ, वो सर्विस इंजीनियर हैज टू टॉक टू हिज मैनेजर एंड ऑल दैट थिंग्स, ओके। सो ही द गाय इन द सर्विस सेंटर हैज टू टॉक टू कर्नाटका सर्विस सेल्स सर्विस engineer. He has to, that sales engineer, service engineer has to talk to his manager, then it will be approved, okay. And then on Saturday morning he called me, that service engineer, and he told me कि भाई एक काम कर, तू बेलगाम जाके रिप्लेस कर, बिकॉज वो बेलगाम में इशू फाउंड हुआ, तूने बाइक बेलगाम से बाय किया है। मैं बोला बाइक बेलगाम से बाय किया कि मैं दुबई से बाय किया, सर्विस तुम्हारे एक ही रहना चाहिए ना। ऑल इन ऑल कर्नाटका इज कर्नाटका वही बोला मैं। बैंगलोर और बेलगाम। तो फिर मैंने वो बेलगाम के बंदे को फ़ोन किया, वो जान पहचान का ना, वो बोल रहा है कि भाई नहीं वो कुछ तो लफड़ा किए वो लोग, तू मत जा, तू बाप बेलगाम आ जा चुपचाप और बेलगाम में कर ले, मैं तेरे को बराबर कर गया। तो वो उनके पास मत जा करके बोल रहा है, वो कुछ तो लफड़ा किए वो लोग, इसलिए वो लोग दे आर नॉट रेडी टू रिप्लेस इट इन बैंगलोर। क्या बोलूं? I'll be there on Saturday, I guess, Saturday afternoon or evening. So you're saying on 2nd? हाँ ठीक है, फिर मैं फ्राइडे रात को निकल के आ जाता हूँ। If this is a very big if tomorrow I don't get, if tomorrow my agent tells me कि boy I submitted a visa docs by end of 2nd, if you're getting everything, then I have to stay in Bangalore. till 2nd. How much basically in this week I'll get to know if I'm getting my visa in 1 week, a passport in 1 week or 2 weeks. If I'm getting it in 1 week or 1 or 2 weeks, then it is a waste of efforts to come to Belgaum. दो बार देखता हूँ मैं। तू बैंगलोर आ जा बेलगाम जाने के बदले। हाय फायर प्लस भाई, कैसे हो? ना मिले हाँ ना मिले क्यों? आना बैंगलोर। सब लोग बेलगाम में है। कौन सब लोग बेलगाम में? आने के तो ये लोग आ जाएंगे ना बैंगलोर 2nd 3rd को ही, उनके साथ बैंगलोर आ जा। आज कॉल आया था मेरे को प्रतीक और अनिकेत का। हाँ वो लोग बोले बेलगाम आ जा, कुछ भी बेलगाम आ रहा है, नेक्स्ट वीक पीएफ को भी बोल 2-3 दिन रुकने के लिए देते हैं। आई डोंट थिंक मैं भाई मेरे से वीजा पे डिपेंडेंट है। फायर ब्लास्ट, ओ फायर ब्लास्ट भाई। Who is Fire Blast? Fire Blast is a guy that I met on I think this thing Valorant, and then he is following me since then. बेचारे को सोना पड़ता है जल्दी कार्तिक। Alex, We've all been there. We've all done that. ये क्या, ये डेटा है बोलते हैं? What the fuck is this data? What is this? हुआ डेटा डाउनलोड हुआ, ट्रेनिंग का डेटा है, पर इसके ओके लेट्स जस्ट फकिंग एक्सट्रैक्ट दिस। 2 GB एक्सट्रैक्ट करना बहुत टाइम लगेगा। मैं जो भेजा वो Delay चल रहा है जरा YouTube पे। क्या बोला एलेक्स तूने? आई डिडंट हियर। मैंने एक दूसरा डेटा सेट भेजा, वो डाउनलोड करने के। योलो V5 इमेज मत खोल रे माँ। सेम है, कैगल वाला ही है। कैगल वाला ही है एलेक्स वो। नहीं रुक, गिटहब अल्ट्रालिक्स योलो V5 नहीं, इट इज इमेजेस का एक है। हाँ कार्ता सेपरेट डिफरेंट है बे, but this is not okay, it's okay, we can नहीं है and that's fine, and that's fine ये इसका it is a short data set। वो एक कोको 128 बोल के एक है, उसका ओरिजिनल कोको डेटा सेट बहुत बड़ा है। ये डाउनलोड कैसा करना है? डाउनलोड 22 MB, ओके। और इसके अंदर लेबल्स का भी ये है इसलिए मैं वो आई थिंक वही फॉर्मेट में है। सैंपल टू कुछ ही ट्यूटोरियल एक मिनट। वो मेरा आर्काइव भी ऑलरेडी ये हो गया। दिस इज कार। The thing with this car data is that there is
no labels file. I don't see any labels file in it. सिर्फ car है. कार. Okay, train में क्या है? हाँ, सिर्फ कार के फाइल्स है. मैं कार के फाइल्स लेके क्या करूँ? Annotation test CSV. Fuck not now, bro. Train CSV. Okay, train CSV के अंदर है वो, पर वो image name है सिर्फ. There is no class. Hey, fuck it, bro. There is width. Okay, now I need to fucking read names.csv. Oh. Wait, fuck it, bro. Wait. These are nice songs, man. I'm saving this playlist. वो किसका है? वो NCS का है. YouTube. NCS के गाने सुन के जमाना हुआ. Extract. Last NCS का playlist I heard was हम hostel में नहीं सुनते थे. There was compilation एक था देख. Yeah, perfect, Alex. This is what we wanted. Perfect. नहीं है तो वाला क्या हुआ? क्लास नहीं है. क्लास नहीं है उसके अंदर. अपन प्रीफिल करेंगे ना क्लास. एक स्क्रिप्ट लिखेंगे ना जो सबके अंदर जाके क्लास भर देगा. I think 45-49 is the class only, Alex. 45-40. That is it's the class, and then you have the width, height, and center x, center y, and width and height. But I was checking मतलब वो okay एक मिनट. Okay, so I have the data set ready. Now I need to with this I can close. I need to come to this. Okay, so pre-trained. I don't want pre-trained. How to train? Okay, now I got the data ready in which I have got train, in which I got images and labels. Okay, now I need to create a YAML file. The file is called dataset name.yaml. For instance, cars.yaml. Paths to images, path validation images. Okay, no, I don't want to test image. Number of classes, like the remark. List of class names. Oh fuck, this is gonna be a readme.txt. Okay, the problem with this is we have no idea how many classes are there. We have no fucking idea how many classes are there. 0 से चालू होता है, maximum number क्या आता है? 45 दिखा मेरे को. ये sort कर भाई name. Okay, 650 में क्या है? 15 है. Okay, उल्टा sort कर. 9 में 45 49. मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है कि नहीं, बट उसका ओरिजिनल क्लास का क्या बोलते हैं, कौन सा क्लास क्या है वो. So the classes are 44, 51, 51, Alex. So that is identified to something. I don't know what that is, but ठीक है. Means we can just वो बाद में, but max we don't know. Okay, you have to write a Python script. It will go through all of these, all the text files. 49. Huh? 49 is the maximum. अभी No, bro. I saw 75 also right now. हाँ 51. I see 51. वही बोल रहा हूँ मैं. 36 है, 35 है, 71, 61, 58. So why don't we write a Python script that will loop through 59. a new Python file, get 49 नाइफ है वो इमेज में. नाइफ क्या लिख रहे हैं? import OS. File names is equals to os dot list directory. Paths. The path would be this. For file in file names, class names is equals to a list. For file in file names, read a text file.
लिखा है there it's 196 classes. 196 किधर लिखा है? Same Kaggle का page. ओके पेज में लिखा है. Stanford cars data set 16,185 images and 196 classes of all the cars you'll ever dream of. $127, 128 images. You're looking at the other thing, Karthik. तू कौन सा यूज कर रहा है? What are you using? 22 MB वाला? हाँ, because उसके अंदर we have the file structure as we want it. Okay. Discussions, मैंने नहीं लिखा है. code, metadata. इसमें just go to discussions page. Coco 128 वाला. उसमें है. I would like to know the ULFI deals and class imbalance. The class ID 0 is oversampled and other classes undersampled. Automatic code, Coco sample system magnitude 5,000. We'll just put it from 0 to 100 na. हाँ. Oh. No. Okay, this I can close. I don't want this. Okay, so I need to create a YAML file first. Shit. I can do it in my learning YOLO only. New file. Test train.yaml. Path image. हाँ? नहीं nothing. ये ट्रेन डालना है पहले. ओके सो ट्रेन उसके बाद ओके ट्रेन विल बी ट्रेन इमेजेस का पाथ डेटा सेट सैंपल डिलीट करता हूँ मैं. ट्रेन इमेजेस का नाउ शुड इट बी इन कोट्स? नो, नॉट इन कोट्स. The next is validation. Validation also requires the same thing only. We can use the same pattern, that is fine. Then you have test. I don't want number of classes. NC is 100. Names. ये print करने लगाएंगे. रुक इसको. क्या था बे वो? Print range 1 to 100. No. How the fuck do I print 1 to 100 numbers? Print 1 to 100 numbers. मैं भूल ही जाता हूँ simple basics. How to printing 1 to 100. हाँ, for number in range. Range का predefined command रहेगा ना? नहीं. You have to do for number in range. Print. Actually, what if I do? Wait 1 second. Because I idea. Print list of range. Got it. Control End. Copy. YAML file. Does it need fucking quotes? No, don't tell me you need fucking quotes. मेरे quotes नहीं करना है. Quotes की जरूरत नहीं है because आपने तो integer है. चलेगा I think so. Let's try it. Okay, now next क्या करना है? I have to call python train.py. I have to give number of images. What the fuck is batch? What the fuck is batch? कितना images आपने train करा? हाँ? At a time कितना images train कर रहे थे? Okay, and epochs is? So number of times you do the training. Reiteration. Yeah, I mean. retraining रहेगा. And weights is YOLO P5. ठीक है. The image 640. What do you need?
No clue what is image. Okay, it is the 40 first images argument. like उसके पास. No. Is the desired image size 640 pixel is a common shape to use, but you could choose another size. So what we can do is we can go here, we can check its properties, details, 640 by 8480. 640 डालना है अपने को. So now the point being, where the fuck do I execute this? वो नीचे उधर ही कर. टर्मिनल में ही कर दो बोल रहा है तू. हम्म. माइनरली करेंगे रुक, तो विल बी एबल टू रिमेंबर. कॉपी पेस्ट किया ना, याद नहीं रहता है. पर train.py इसके अंदर नहीं है. आई हैव टू डू इट इन YOLO v5 ना. देन train.py तूने क्लोन करके लाया ना इधर. इधर तो है तेरे पास. तेरे फोल्डर में है. If you have cloned, then there's already a Python हाँ file. correct. img You just have to 640 change the contents. batch 16 करेंगे, epochs 3 करेंगे. Okay, data. I need to get that fucking YAML file का path. Fucking copy path. Then I need weights. Weights is YOLO v5s.point. Okay. Execute train.py with the image width of 640. Run 16 batches of 3 iterations. Take the data from testtrain.yaml. Okay, and execute it. Python was not found. Python 3. No. नहीं. ये Python क्या? का path ठीक है क्या देख Python का? हाँ रे भाई, बराबर है. Interpreter settings. क्या एरर आया? Python 3.7 YOLO v5. रुक रे बाबा. That was Existing not. Python exe. नहीं, YOLO का क्यों ले रहा है ये? नहीं, YOLO का नहीं ले रहा है ये. App data python.exe. Okay. Apply. Okay. Python 9. अपन इससे एक अच्छा काम करते हैं. Users, but it won't. Can I fucking call this file? Okay, we'll do this. Kushal Patel, app data, local. Python है क्या इसके अंदर? Local roaming तेरा है ना? इंटरप्रेटर सेट किया क्या? हाँ, इंटरप्रेटर सेट किया है मैं. देखना इधर. इंटरप्रेटर use the C users app data local programs Python 3.7 python.exe. इंटरप्रेटर सेट है मेरा. वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा. आई थिंक सो. अलाउ एक्सेस. ओह, लेट्स ट्राई दिस. नहीं, दिस won't work. I have to activate my virtual environment. नहीं, एक मिनट रुक. वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट. So you can activate your virtual environment by going to 5 projects, YOLO v5, virtual environment, library. Oops. Activate VNV Python Windows 10.
VNV scripts activate. हाँ अभी चलेगा. VNV scripts activate. No. That. वो इसमें है ना, इसमें है. हाँ उसमें है, वही बोल रहा हूँ. YOLO v5 virtual environment scripts activate. ना. ENV scripts activate, yeah. तो वही ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है इस यहाँ से. इसमें CMD में करते रहो. हाँ अभी हुआ. Python 3 paths to train.py. इसका पाथ कहाँ से कॉपी करोगे? मैं train.copy path paste. Now I need to come back to this, open terminal and copy all of this, paste it and enter. C uses cushion not internal recognize command. हाँ. Deactivate TLS Python. Python. I know what is wrong here. Environment variables. Environment variables. Python added है. This have to maximize this. C users. New. Environment variable नीचे. हाँ ये रुक में ऐप डेटा में जाके लोकल में जाके पाइथन ही नहीं है इसके अंदर भी. है ना बरोबर. ऊपर है किधर है? बरोबर है बोला मैं. बराबर है मेरे को पता है बे. लोकल ऐप डेटा लोकल programs. Okay, programs Python. I need the .exe file. I need to add it to my new variables. Okay. So now if I do cmd and if I do Python, it will activate. Then I can say come down. So copy path, let's do path, paste it on it. No. Okay, so cancel it. Exit DLS Python and then copy this. Can't find main module in C users push. Oh, because of this fucking thing. Space. Anyone knows how to ignore space? नहीं. क्या डालने का बे? ASCII for space in CMD. Not able to use ASCII space. Try using underscore. Underscore नहीं है बे. The name doesn't have underscore, right, Karthik? There is no underscore. I cannot change this as user created by Windows. If I change it, everything will corrupt. What is ASCII code? Right space in CMD when spaces in command prompt.
Single quotation marks won't do it. You have to add quotation marks around each path and enclose the whole command in quotation marks. डबल कोट्स डाल के देख. डबल कोट्स डाल के देखो. नहीं How to escape? डबल कोट्स एक ही बार डबल कोट्स डाल अराउंड द पाथ. And unrecognized arguments. Okay, huh. I thought so. So it needs quotes here too. अरे एंटर क्यों मार रहा हूं मैं हर बार? ओके, कुछ तो हो रहा है. ट्रेन हो रहा है. ट्रेन हो रहा है. Scanning. It is scanning the images. 128 found, 0, 2 empty, 0 corrupt, 100%. New cache created. Scanning. So this is the first iteration. This is second iteration, right? Epoch 10012. Memory देख कितना यूज हो रहा है. 12 GB यूज हो रहा है. GP यूज ही नहीं हो रहा है पर इतना. ये तो फुल यूज हो रहा है. 3.7 GHz पे चल रहा है वो. GPU ज़्यादा नहीं लेगा. GPU ही लेगा ना. It works on GPU only, right? कार्तिक. 2D images no. 2D image वो GPU लगता है बे. You need GPU to do edge detection, right? हाँ तो इतना नहीं लेगा. मतलब नहीं लेना चाहिए. Exactly. We'll also do one more test with this. Look at those spikes. वो spikes तो छोड़ दे. वो किधर गया अपना speed fan किधर गया? CPU देख. अबे हाँ ये कुछ तो लफड़ा हुआ है स्पीड फैन के साथ. इट्स नॉट एबल टू डिटेक्ट माय कोर्स. CPU कोर्स ओनली. तो पहले दिखाता था फुल CPU कोर्स सब कुछ दिखाता था वो. अभी कुछ भी नहीं दिखाता है. सिर्फ हार्ड डिस्क का दिखा रहा है. कितना टाइम लगेगा लग रहा है तेरे को? ठीक है, till this happens, let's just fucking come here. Close this, close this, close this. Let this be here, let this be here, let this be here. This we don't need. Okay. When training object detection, you should pay careful attention to various aspects. And Ultralytics suggests that you train with default settings first, as this is often sufficient to obtain good results and provides a baseline for further optimization. After that, you can try to check your data sets and hyperparameters. Does anyone know what hyperparameters are? वो तेरा क्या बोलता है वो किधर लिखा है ये? This is written in here. Once you finish this line. वो train.py में किधर तो क्या बोलते हैं वो जो PyTorch में कॉल करता है वो फंक्शन, उसमें you have these minor small things that you can edit. Each of those things are called as an hyperparameter, but कैसा एक्सेस करने का वो मेरे को पता नहीं. Hyperparameters. If open YAML, save float, logger, hyperparameters, save run settings, save directory, loggers, configurators, plots, CUDA, how many CUDA cores you want to use, model, what model you want to use, what you want to freeze, what is the image size, what is the batch size, what is the optimizer you're using. Okay. Normal batch size is 64 bolte. Fuck you. Scheduler, so you can schedule, you can resume, start epochs. Okay. Sync batch norm. This is the best thing about क्या बोलते हैं
PyCharm ka. I don't know it's there in Visual Studio or no, but you can do this. You can go to each iteration very directly. वो indexes create करता है सबके लिए. You can easily go to each and everything. What is path? Okay, what are hyperparameters? Hyperparameters. I can search for okay. Hyperparameters are model parameters whose value is initialized before the learning takes place. Hyperparameter tuning refers to the process of determining the final value of those parameters, ensuring the algorithm performs well. Not only on the training data but also on new inputs. In neural networks, there are many parameters to tune. Below are the ones explored. Transfer learning versus fine tuning. Transfer learning is transferring the weights of an already trained model to another problem, initializing the model with those trained weights and training the whole network on the new data set. It is optimizing all parameters. Oh, okay. And fine tuning is freezing of all or some layers except the penultimate layer and train the network to just learn the representation from the penultimate layer. Okay. So this depends on use case. If you want to completely retrain it or you just want to freeze some levels, like for example, if your sedan detection is very good but your truck detection is false, you can just freeze sedan and only detect trucks. Train on trucks on the same model. क्या बोलते हो? ध्यान नहीं दिया. एक समझा वर्ड भी मुझे भी नहीं ध्यान नहीं दिया. Okay, ठीक है. So basically there is two kinds. See, hyperparameters are things that parameters that you're using to train or tune your models before the training starts. Okay. उसमें there are many ways. Okay, first is transfer learning or fine tuning. Transfer learning is nothing but, like the name suggests, you are transferring a already trained model to a different sort of training. The weight set of an already trained model to another problem, initializing the model with those trained weights and training the whole network on the new data set. Now, for example, बड़ा GPU यूज करके उसने बहुत बार ट्रेन किया है, so he knows what the best parameter is. You can just copy that model on that parameters and you can run it on your own. Yes, okay. And retrain it. Now you can retrain it. Like hyperparameters are used for training. So now, for example, you have a use case. See, your system works very well on 640 pixel ka image. Maybe you want to go to 800 pixel ka image, but 800 pixel में भी कार same ही दिखेगा ना, most probably. So instead of retraining for 800, why don't you just take a 640 pixel ka model and weights and just train it with the 800 ones and see what value you get. Is what I understand. Fine tuning is nothing but like you're freezing some layers, okay, like weights of all or some layers, and accept the penultimate layer and train the network just to learn the representations of the penultimate layer. Basically here you are saying that I think कि तुम लोग एक set of objects को freeze कर लो, बाकी नए objects को train करो, something like that. Then you have learning rate and optimizer. Now this we need more data. लर्निंग रेट ऑप्टिमाइजर तो ML पढ़ेगा तभी समझेगा. हाँ वही. बट अभी के लिए ये सब हाइपर पैरामीटर ट्रेनिंग छोड़ दे. वो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है उधर? नेक्स्ट स्टेप वहाँ हो गया. ट्रेन नहीं हुआ अभी. हाँ हो गया. रिजल्ट सेव टू पाइचार्म ट्रेन EXP. Fuck is EXP? YOLO runs train. हाँ अब इसमें ट्रेन का यही है ही नहीं वे. पाइचार्म पर YOLO v5 runs. ओके runs के अंदर ट्रेन के अंदर EXP के अंदर वेट्स. best.pt इस PT ये भाड़ में गया. ट्रेन बैच 0 JPEG ये देख. Validation batch. So now if I give it some random image, it should be able to detect and say what it is. Let's give it an elephant ka image and see. Okay, now we trained it. Up to that shit.
ओके ओके, ये सब भाड़ में गया। ब्रो हाउ डू आई यूज इट नाउ? भाई ट्रेनिंग के बाद भाग के गया तो ये बंदा। हाँ बस वो उतना ही सिखाएगा, बाकी के लिए उसका कोर्स में पैसा दो। उसने उधर क्लियरली लिखा ट्रेन योर ओन मॉडल, बस उतना ही सिखाएगा वो। अबे उसके बाद क्या करना है? अभी अभी तो लिख टेस्ट योर वो योलो V5 मॉडल करके, मतलब वो ट्रेन टेस्ट डॉट py कुछ बनाया गया, रुक 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 रुक, तो तेरे ये को दूसरा एक थोड़ा इमेजेस लेके टेस्ट कर सकता है। एक बट मिनट, ये बंदी ने ट्रेनिंग किया। ओके, इस बंदी ने ट्रेनिंग किया इन्फरेंस। सो इट इज सेइंग, okay, see now she's saying use detect.py but the source should be from your training runs. See detect test data, weights should be from best.pt. आपने इधर देखा? ये देख weights में best.pt है। use this is what it created right now, correct? So now हाँ let's get some elephant images. Let's get some elephants, elephantas. इसका रिजल्ट आउटपुट कैसे दिखता है वो? ठीक है रुक जा, Okay, you मैं want to see the command prompt, तो इधर दिखता है। नहीं 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 हाँ उसने वो आर्टिकल में कुछ बताया क्या? नहीं, so okay, so let's go back to the article. Let's close things that we don't want. Okay, this guy, कमांड this guy, प्रॉम्प्ट में क्या वो क्लास दे देगा? हाँ, ओके see the detect.py file is this, the image which must be the same as the training size image. Okay, source is the path of testing data or testing image file. Weights is the path of the trained weights file. Okay, confidence threshold above which object must be detected. Okay, this is something that you can edit. This is something your training thing will generate. Your train.py will generate this weights. Okay, so if you see in this, if it says result saved to Pythonm projects YOLO v5 runs train exp. Okay, Pythonm projects YOLO v5 runs train exp, उसके अंदर weights है, weights के अंदर best.pt है। समझा? कर नहीं समझ करने, गया। अभी इट करने विल के लिए, क्रिएट अ फोल्डर हाँ, कॉल्ड योलो डिटेक्ट, वो उसमें करेक्ट आउटपुट ड्राइवर, ठीक है? करेक्ट अभी करेक्ट। दो तीन रैंडम इमेजेस डाउनलोड करके देख। बट प्रॉब्लम क्या है, वो 640 वो सिंग के टेस्ट करने के लिए सेम सेम इमेज का सॉरी सेम साइज का इमेज कहाँ से लाना अभी? एडिट करना और क्या। Save images. Now if we go learn with us data set, test, okay, images, ये बाबा 001 web pq आ रहा है भाई, ये .jpg jpeg ना कि jpg jpeg whatever. JPEG is different. No, not this, not this. No, I'm not running this, I'm just doing Extension इसका web की है. detect.py. Now what did she say? Let's try it ना, देखते क्या होता है अगर अपन डिफरेंट साइज का दिया इमेज का। okay, इसका सोर्स इमेज का we need the drive, learn with us, data set, test images, ये लिस्ट तेरी माँ का व्यू इधर गया भी, डिटेल्स नहीं इसमें भी नहीं दिखाता है, प्रॉपर्टीज डिटेल्स 768 है, ठीक है। image should be 768, then source, what the fuck is source? Source is the path of the testing data. Okay, so I need source should be this, copy, encode, paste it. Okay, then you need weights should be the path to the weights.pt file. Okay, so I can come here, dot, come here and say copy path, absolute path,
इसको भी कोट्स में डालो। फिर इसके बाद आई नीड कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड। कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड 0.4 एग्जीक्यूट। रिजल्ट सेव टू detect exp। what is detect exp now? detect में ओके नहीं हुआ डिटेक्ट। कॉन्फिडेंस इंटरवल थोड़ा कम कर। कॉन्फिडेंस नहीं तो तेरा ट्रेनिंग डेटा सेट में से ही कोई एक इमेज उठा के डाल। exp2 बना, इसके अंदर क्या हुआ? डिटेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, लेट्स डू दैट देन। लेट्स गो टू train data set images। I need fucking elephants। क्योंकि humping elephant, walking elephant। नहीं नहीं मतलब एलिफेंट तेरे ट्रेनिंग डेटा सेट में था ही नहीं तो वो नहीं कर ही है, नहीं पाएगा। था ना, ID20 का था ना। I ठीक है। saw elephant हाँ but backside था वो। ये था ना। अभी the point being not that ना कार्तिक, point can be anything, your point of view can be anything, right? ठीक Now if है you run this, मुश्किल है बट ठीक है। थोड़ा इंटरवल कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड कम करेगा तो शायद दिखेगा। इसमें डिटेक्ट नहीं हुआ, इसमें भी डिटेक्ट नहीं हुआ, इसमें भी डिटेक्ट नहीं हुआ। ओके, कॉन्फिडेंस बेस्ट में 0.1 किया एलेक्स मैंने, और कितना कम करूं? फिर नहीं है हाँ, ठीक है। And it is pointing to weights, train exp weights best.pt is what she said. See, she said run your detect.py. Okay, we run detect.py. Abhi, okay, we'll do one more thing. We'll go home and we'll make it 640. 640. Okay, exp4. नहीं हुआ डिटेक्ट, नहीं हुआ डिटेक्ट, इसमें भी नहीं हुआ डिटेक्ट। ठीक है, लेट्स जस्ट डिलीट ऑल ऑफ दीज idiots। डिलीट डिलीट। okay, so that is how you run it, but it is not able to weights। is weights the key correct? Let's see it, ls source weights YOLO experiment weights confidence threshold 0.1 confidence 0। तो इमेज साइज में क्या डाल रहा है? हाँ, इमेज साइज में व्हाट आर यू यूजिंग? 6 width। एलेक्स कुछ तो हुआ क्या अभी I इधर? don't think it's supposed to be the height and width. Image size as in I think it's the file size. No, okay, तेरे को मैं नहीं। I will show that to you कार्तिक। तू बोल जो बोल रहा है ना, किधर गया ये? 640, the first argument is a desired image size। 640 is the common shape to use, but you could choose another size। pixels में दिया है देख। Okay, फिर ठीक है। वो तेरा एलिफेंट इमेज जो तूने यहाँ पे डाउनलोड किया है वो 640 है। नहीं, वो 768, that is also a test ना। एक मिनट रुक। warning exceeded, model summary, fusing layers। what did I run just now? detect.py I ran, right? what did you give me, bro? oh तेरी माँ का। when you made confidence 0 what happened? see, तो मतलब कुछ भी डालेगा वो बोलेगा। तो क्या डालो अभी? 0.01 डालू? नहीं, 0.1 ही डालते और रन करते। तो तेरा आउटपुट देख। लोड होने के लिए मैं रुका है। 0.1 डाला तो कुछ भी नहीं आता है, 0 डाला तो कुछ भी नहीं आता। 0.05 डालेंगे, चल 0.05। अभी तो कुछ मिला क्या इसको भाई? अभी भी कुछ नहीं मिला। 0.05 को भी कुछ नहीं मिला उसको। तो अभी क्या करे? 0.02। और
ट्रेनिंग सेट से एक इमेज उठा के देख। ट्रेनिंग सेट के इमेजेस है ये दोनों एलेक्स। अच्छा वो भी नहीं कर पाया। मतलब हाँ, है। द पॉइंट बीइंग दैट कि ट्रेनिंग सेट की इमेजेस भी वो नहीं कर पा रहा है। कुछ Because तो if you see, कारण। okay, see this train batch 2, not train batch 2, sorry, train batch 1, 1, 0, हाँ 0 में देख, this image is there, correct? And this is the image that we have here. सिर्फ rotated है वो, होना चाहिए ना डेटा बेसिकली। ठीक है, let's try to get bicyclists और persons, people के images लेते हैं। चल अभी ट्रेन इमेजेस 1 2 3 4 5 6 कॉपी, गो बैक, टेस्ट इमेजेस, पेस्ट, ओके 1 2 3, एलिफेंट को भाड़ में गया। TLS करो, इसको 0.1 करो और रन करो। I don't think it has detected anything again. Let's just fucking check. No detection again. No detection again. No detection again. No detection again. वे सब कुछ सेम ही है ना? best.pt वापरने का है, उसने बोला best.pt वापरो। See, she has said use best.pt only. The path of the trained weights file. Huh? What if we use last.pt? Experiment 6. Nope. So there is something that we are missing out here. Okay, and we don't need to use this actually. We can just directly come here. Open another window. Go to detect experiment 6. Nothing detected. क्या करना है बॉयज? इसको 0 किया तो बहुत लफड़ा देता है, ये 0.01 किया तो नहीं वो तो मतलब तो 1% कॉन्फिडेंस रख रहा है तो वो हर कोई कुछ भी उसको जो लगेगा वो बोलेगा ये। हाँ पर तो भी हाँ यहाँ कुछ तो हुआ है। मेरे को ये नहीं समझ रहा है एग्जैक्टली सेम इमेज है पर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है वो। ये वापस रिट्रेन करेंगे उसको और एक बार। पैरामीटर्स तो करेक्ट है ना सब? Maybe we'll retrain it once again. एक बार वो क्या स्टेप्स में थे वापस जा देना और मेरे को दिखे दे साथ में जाते हैं। ट्रेनिंग स्टेप्स और डिटेक्शन स्टेप्स। ट्रेनिंग स्टेप्स, ट्रेनिंग वापस ट्राई करते अपन। अगर ठीक है। ट्रेनिंग गलत हुआ है तो हो सकता है। So training में you have to create a data set first, right? Okay, let's go from one more level on top. Preparing the data set, you need to have images and this. So you need to have one folder called images, one folder called labels. वो है अपने पास। Each image का एक text file चाहिए, तो let's first check that if each image का एक text file है क्या। So now if I copy this, come back, come here, find this, है इसका text file है, ठीक है। Okay, so उसका text file है and we created a YAML file. So this YAML file is in, not this, what the fuck did that eject for? The YAML file is here where you're saying path to training is train images, path to validation is train images again, and number of classes is 100 and all the classes are set defined here. Maybe 100 is too much. No, but if it doesn't have, it doesn't have. Correct, that is also right. The YAML file also is created.
करेक्ट? Can I repeat? ओके ठीक है, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, तुमको ऐसा दिखाता हूँ मैं, ठीक है? सो लेट्स गो टू लेबल्स. So this labels file is okay with us, right? We created images and labels, correct? ठीक है, YAML फाइल का बताओ. हाँ ठीक है. Now if we go to YAML file, what he said, the YAML file should have a key called train and a path to the images. We gave that. Yes. हाँ. Then a thing called val. Val is nothing but validation. Okay. Where Valid- point. एक काम कर, थोड़ा images और थोड़ा text file और एक दूसरा validation folder बना. No, you don't have to do this. Let's do this. Control V. Val करते हैं. इसके अंदर random नहीं होगा. Random images select करो. Shift delete मारो. 115 items. ठीक है. And put it, point it to val. ठीक है. Then they are saying NC is number of classes. We have given 100 because we actually don't know how many classes are there. But it's एक okay. I'm just watching you do the steps. थोड़ा lag है. रुक जा. No, But what val का मैं देख रहा था. Did you copy random images and labels? Yeah, labels is you only need images for val. अच्छा. Okay. और वो images ट्रेन में से निकाल दे जो तूने लिया. मैंने random images delete किए अभी. Okay. Let's do one thing again. ये val को delete करते हैं. The train Validation. should be unique and the val भी unique चाहिए. Copy paste. ठीक है. First 10 images में delete करता हूँ. ठीक है. Corresponding labels भी delete करते हैं. ये भाई ये बहुत लफड़ा रहेगा. रुको एक मिनट, इसको पहले sort करेंगे. थोड़ा आराम से. वही. Is it sorted? Yes, it is sorted. From 9 to 8, 9, 94 delete करेंगे. ठीक है. We can do this. एक मिनट, मैंने कुछ लफड़ा किया. 9 to 94 delete. This. You only want 9 to 94. Everything else we can delete yourself, right? If I come back, this should be train. This should be val. Okay, then this should be train. ठीक है. Like you said, validation में 10 images, 20 images है. Those 20 images not in your training algorithm and the labels have been deleted for them. ठीक है. Now then he said just execute the command. Okay, 640 लेके. अपन एक बार चेक करते हैं. मेरे को थोड़ा डाउट वो क्लासेस में है क्योंकि अपन फुल सब क्लासेस डाल दिया उधर. वो 0 to 100. मुझे भी वही लग रहा है. को थोड़ा डाउट है बट ठीक है. लेट्स सी. Let's try it. Okay, did I save that Python file? को वाला फाइल ओपन करके देखने दे कि उसमें क्या कौन सा क्लासेस यूज कर. अपन नंबर ऑफ epochs increase करके इंक्रीज करेगा ज्यादा टाइम लगेगा. है दंड वैसा रहने दे. क्या हुआ करता? 3 ही रहने दे. क्या हुआ ये? No labels in dataset train.cache cannot train labels. Okay, I think I know what happened here. Images. I think I know what happened here. Images. I think I know what happened here. Okay, I understood what happened here. Now the point being,
Okay, you will need that also. I realize that. Sample to Coco level stream 0 to 94 copy. Count to data set, count to train, count to val. I need levels. Fish. Save. CLS. Maybe it is YOLO V5S का issue. What did we run when we did this? एक मिनट कुछ देख रहा हूँ। नहीं, तू देख ले, मैं वो देख रहा हूँ। कहा तेरे में ट्राई करके एक बार क्या? तो डेटा सेट डाउनलोड कर, योलो वी5 डाउनलोड कर, तेरे को कमांड भेजता हूँ, एग्जीक्यूट करके देखेगा। मैं बाकी सब करना, मैंने कुछ नहीं किया अभी। ठीक है, Watching your stream. एक काम कर, जस्ट फॉलो मी ऑन माय स्ट्रीम। ओके देख, ठीक है, आई विल शो यू। तेरा पाइथन किधर इंस्टॉल्ड है? As in वेयर डिड यू इंस्टॉल योर पाइथन? डिड यू इंस्टॉल योर पाइथन? सी में है ना, यूजर्स ऐप डेटा में है ना? हाँ हाँ, डिफॉल्ट पाथ। लोकल प्रोग्राम्स, पाइथन में जा, पाइथन 3.7 में जा, स्क्रिप्ट्स में जा, और स्क्रिप्ट में cmd एग्जीक्यूट कर। किया? It's not using GPU at all. App data, local. Programs, Python, Okay. scripts, scripts पे जाके cmd, Scripts, okay. cmd, Okay, ठीक है, okay. PowerShell है default, ठीक है. PowerShell मत कर, cmd कर रहा बोलता हूँ मैं। तेरे ओके, एक काम कर, तेरा जो एड्रेस बार है ना, उसके ऊपर क्लिक कर, इरेज करो, cmd टाइप कर। Okay. हुआ? cmd खुला? हाँ. pip install pip space install space minus capital U हाँ. space pip. I already have pip installed. नहीं, it will update your pip. Minus Requirement already satisfied. ठीक है, अभी pip install minus R and then तूने जहाँ git checkout किया है ना, वहाँ वो requirements.txt फाइल का पाथ ले और वहाँ पेस्ट कर। क्या? git तूने चेकआउट किया ना, हाँ. वो फोल्डर में जा, वहाँ requirements.txt फाइल है। Git के फोल्डर में. हाँ, गिट के फोल्डर में, नॉट योलो के फोल्डर में, नॉट गिट के फोल्डर में, योलो के फोल्डर में, सॉरी। डाउनलोड नहीं किया मैंने. हाँ, डाउनलोड कर ले, I have not cloned the repository अभी. क्लोन कर ले वो, ठीक है. उसके बिना तो कुछ रन नहीं कर पाएगा।
और तुझे .exe फाइल एनवायरनमेंट वेरिएबल में डालना पड़ेगा python.exe. New repository. Clone repository. भाई गाना चेंज करता मैं. किधर गया ये डिस्कॉर्ड बॉट कमांड्स. हेल्प हेल्प नहीं हेल्प. अबे Could not send documentation to your DM. नेक्स्ट सॉन्ग नहीं नेक्स्ट करना है सिर्फ. नेक्स्ट हाँ YOLO V5 का क्या बोला तूने? ओके. requirements.txt फाइल है उसके अंदर. हाँ ओके उसका पाथ कॉपी कर. कॉपी एज पाथ. हाँ ओके वो CMD में जाओ और -r के बाद वो पेस्ट कर स्पेस डाल के. ओके results.png क्या बोल रहा है. XP3 जाना है. किसी XP3 में ही हुआ था क्या ये? installing collected packages. हाँ वो खोलने दे उसको. Oh, वो बहुत लेता है टाइम. yeah, there are like 15 packages here. कुछ भी नहीं है करते वो. Code, वो कुछ भी नहीं है. मेरे को बोल रहा हूँ. like cache tools, file मेरे जो एप्लीकेशन का requirements.txt है ना Hmm. वो अराउंड 100 मॉड्यूल्स का है. 100 पैकेजेस का है. Nope, it's not able to detect even with retraining it. Fuck. Why are you not able to detect it, bitch? Nope. Okay, done. हो गया. ओके तूने वो 122 मेगाबाइट्स का डाउनलोड किया. नहीं कर पाऊँ. कैगल से वो डाउनलोड कर. एलेक्स तू भी ट्राई कर रहा है. नहीं मैं देख रहा था तुमको. बहुत लेती प्रोसीजर है. ठीक है मैं भी करता हूँ. ओके बट वो आर्टिकल व्हिच में करता. Yes sir, on the way. I'm sending it to both of you. मैंने ऑलरेडी जनरल चैट में डाला है पर I'll send it to you. medium.com. लास्ट टाइम रुक जनरल चैट जी है ना getting started with YOLO V5 in a few minutes. Okay, जी एनालिटिक्स with YOLO. ये मीडियम ये ट्रेनिंग का है. ओके ठीक है मैं ट्राई कर रहा हूँ. Okay, I'll send you the commands also. मतलब कि you guys don't have to copy paste the commands again. है कि नहीं? कार्तिक पहिला जाऊन हे कर. एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल्स में जा आणि ते ॲप डेटा लोकल प्रोग्राम्स python.exe का पार्ट घाल. उसके बिना तेरा ये नहीं चलेगा. जब तू पाइथन डालेगा CMD में वो रन नहीं होगा. क्या करना क्या बोला? एनवायरनमेंट वेरिएबल्स खोल. हाँ पाथ ऑलरेडी है पाइथन का मेरा. पाइथन का नहीं python.exe का चाहिए तेरे को. वेट आई गेस उसका ही है. भाई साहब पाइथन 310 स्क्रिप्ट. ये मैं शुशु करके आता.
हेलो, हाँ एक मिनट. मेरे को लगा ये आ गया. ऑलरेडी सेट है मेरा इंटरप्रेटर python.exe. No, yeah. We- let me start. हाँ, मी करून घेतो थोड्या वेळ नंतर. हाँ I have people who are in my house who know all these things. Let's see, they'll come and help us if it कौन? works. वो मेरे जो roommates है ना, एक सैफ है एक आशीष है, तो both of them have done this. Okay. So let's see. इंटरप्रेटर ऑलरेडी सेट है python.exe पर. Interpreter की environment variable पे इंटरप्रेटर तेरे को विजुअल स्टूडियो नहीं चाहिए अभी, तेरे को environment variable सेट करना बोला मैं. देख, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में there is path, okay? हाँ, path के अंदर you will have the Python folder or you can have the python.exe. Okay, let me see. I'll show you mine, okay? Just check mine thing, okay? Users, data, locate, ये देख, programs, wait. कहाँ दिखा रहा है तू? स्ट्रीम पे बहुत डील है, I guess. 20 seconds भी नहीं रहेगा, I don't think so. 10 सेकंड का रहेगा. हाँ, okay, अब दिख रहा. लास्ट वाला देख, python.exe. Okay, ठीक है. Python dot. तू ऊपर का कॉपी पेस्ट करके कर सकता है, थिंक सो. Copy as path. आ गया. I'll just add a new one. Oh my God. Silly हो God. गया. Done. डन. हाँ. डेटा डाउनलोड कर ले. क्या? डेटा डाउनलोड कर ले 22 MB का. कर लिया. नाउ ठीक है, तूने वो डेटा को ये करे मीन सॉर्ट मतलब इट. I'll show you how it is in my thing, okay? You see it. Data set train. Where do you unzip the folder though? मैंने एक फोल्डर बनाया लर्न खुद के लिए, लर्न विद अस करके, उसके अंदर मैंने सब डेटा डाल रहा हूँ मैं. समझा? हाँ समझा. और मैंने सिर्फ वो फोल्डर अनजिप किया नेम चेंज करके, और फिर उसमें से डेटा उठा के मैं एक डिफरेंट फोल्डर में डाला, बिकॉज छोटा ही है ना. बिकॉज तू डाउनलोड किया हुआ डेटा को मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ. तू वो लिंक देखेगा ना medium.com में कार्तिक, उसमें दिया है देख उसने, हाउ डू डेटा स्ट्रक्चर शुड लुक.
Matthias Gudiskin. अच्छा, you're talking about the folder structure ना? medium.com का लिंक भेजा ना मैंने, उसके अंदर है हाँ देख. हाँ दिखा दिखा ओके. Dataset, train, images, image files, labels, क्या? Images. So we are using pre-built na. There should be a way to V5. Maybe V5 is no, but V5 should work. Why is V5 not working? As per our understanding, V5 should work. Let's delete the experimental column. वो साला सब इमेजेस रोटेट करके डिटेक्ट कर रहा है, मिरर करके रोटेट कर रहा है बेसिकली वो. आई डोंट नो व्हाई. Oh, prediction it is not able to do. Images में सारे images paste करो ना. हाँ. Okay, validation चल ही नहीं रहा है. Maybe I'll have to retrain this with more epochs. Or maybe increase the batch size to 20. Increase number of epochs to 5. And V5S के बदले V5L use करेंगे. Done. या मैंने अभी ठीक है ना, मैंने एक कमांड भेजा है. अभी तेरे को पाथ चेंज करना पड़ेगा तेरा. आई डोंट नो हाउ विल यू डू इट. मतलब नोटपैड में कर. मैंने जो पाथ भेजा है दैट इज फॉर कमांड जो भेजा है वो मेरे इसके लिए है. सी पाइथन सी यूजर्स केपी पाइचार्म प्रोजेक्ट्स है ना, तो मे बी यू विल हैव टू चेंज इट टू वेरेवर योर योलो इज देयर. Okay. And before that you have to create a YAML file. Wait. जहाँ तूने वो डेटा सेट क्रिएट किया ना उसके बाहर आ और एक .yaml फाइल क्रिएट कर. Just name it something, test.train or something. I'll send you the contents of the YAML file. मेरा सिस्टम लैग हुआ. Okay, because ये हो रहा है ये. Oh, nice. System is fully lagging. Mass lag हो रहा है सिस्टम.
source file. अरे यार Hey, show your YAML file. वही एक मिनट रुक, मेरा सब अटक गया है. I'm copy pasting and sending it to you. I'm sending. मेरे को सोर्स देखना है, मतलब पाथ फाइल. हाँ ठीक है, ये वही है ना. होगा अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ. पहला मैं गलत कमांड डाला तभी एग्जीक्यूट हो गया. मैं बराबर कमांड डाला, कॉपी पेस्ट, वो एग्जीक्यूट नहीं किया. मैं रुका है, मैं सोच रहा कि हुआ कि नहीं. ट्रेन न्यू कैश क्रिएटेड ऑप्टिमाइजर एसपीटी. ठीक है. वाइल का फोल्डर बन. नहीं मत बना, वही सेम यूज कर चलेगा. इसने भी वही किया. एक दूसरा ट्यूटोरियल में हो गया. ये क्या ये भाई इतना सब कम फन सेफ कैनिंग एरर मल्टीपल कब जाना है. हुआ है कि नहीं, कैसा पता चलेगा. ट्रेन हो गया बेस्ट प्रैक्टिस है. ए वाइल के लिए यू हैव टू पेस्ट लेबल्स आल्सो. हाँ नो 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 ओनली नहीं. हाँ नहीं डाल लेबल्स भी डाल. भाई मेरे को कॉपीराइट क्लेम देने वाला है गाना. ट्रेन करने के बाद क्या करने का, वो ट्यूटोरियल किधर है. वो जनरल में वो ये है देख. एनालिटिक्स हो जाएगा. हाँ, अभी वो कमांड एग्जीक्यूट कर. पर कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए जो cmd तूने पिप इंस्टॉल किया था ना, वहाँ उस पे ही कर दिया. पाइथन डाल और एग्जीक्यूट कर. उसका पाथ चेंज करना पड़ेगा ना मेरे को. जो मेरा पाथ है. हाँ मतलब you have to edit the command file obviously. प्रोजेक्ट पाथ इज डिफरेंट. हाँ कमांड तेरे को एडिट करना पड़ेगा obviously. train.py का पाथ. कॉपी पाथ. Don't execute more than 16. okay, सिस्टम क्रैश होता है पूरा. मैंने ट्राई किया अभी 20 बैचेस किया मैंने, फुल क्रैश हो रहा है. What the hell is my output? ट्रेन किया, उसका वो फाइल किधर स्टोर होता है. योलो में जा, वहाँ रन्स में जा, वहाँ ट्रेन में जा. हाँ फिर वहाँ ट्रेन के अंदर तेरे पास वेट्स रहेगा ना. वेट्स EXP के अंदर वेट्स और वेट्स का एक फोल्डर है, बट वो खोल नहीं सकता. ऐसे है क्या? नहीं खोल सकता है ना, मैंने खोला है ना.
EXP के अंदर don't open it. If you But, go to train, go to EXP. In EXP, you can go to weights and just copy the part of that path of the best.pt file. मतलब ट्रेन ही नहीं हुआ, वेट्स खाली है. Weights खाली है. हाँ, train नहीं हुआ मतलब. Basically what I read wrong. कि maybe तेरा दूसरा EXP file है. The first one failed ना. You will create multiple EXP files ना. चलो 35.pt. हो रहा है बाबा. भाई मैं epochs increase किया, मेरा सिस्टम क्रैश हो रहा है. लिटरली क्या epochs increase मत करो तो सिस्टम बहुत गंदा क्रैश होता है. सिस्टम से मेरे पास i7 रह के क्रैश हो रहा है epochs. 5 किया तो मैंने. Bro, cancel. Thank you. Epochs 3 रख. How to retrain it? Epochs कम रहा तो मस्त रहा. image sizes 640 train 640 val. हो रहा है. होने दे, First epoch. देखते हैं. तो अगर मेरा i7 पे एक के ऊपर एक 3 epoch ही चल रहा है. तेरा i7 है? हाँ, मेरा i7 10 gen है. H सीरीज वो भी. ओके ओके. कोर्स ज्यादा है ना लेकिन. हाँ. 8 कोर्स है. इसलिए मैंने लिया ना वो. CPU 100%. 4 gigahertz. बाप रे.
हा ही फाईल हा मॉडेल फाईल मॉडेल नाही वेट्स फाईल ना हीच ना वेट्स फाईल तयार होते जनरेट होती ती हा बेस्ट Training डॉट झाली. पीटी ट्रेन झाल्यावर हा ही वेट्स डॉट पीटी ना जनरेट झाली ती हो झाली आहे थांब मला सिस्टम जरा आता काय आहे गरम झालं सिस्टम जरा हे रन व्हायला ना इकडे म्हणून हे कॅन्सल करूया आपण दोन्ही पो लावली होती पॉप 3 इपॉक लावले मी 3 इपॉक 16 चा बॅच लावला मी अभी 3 इपॉक और 16 के बैच में अड़क तो रहे ये खोला था क्या अपना टास्क मैनेजर उसे चेक किया खुला ही है देखना सीपीयू ले रहा तो कितना साले अबे ये तो इतना ओबीएस भी लेता है 3D कूड़ा सिलेक्ट करो उधर ड्रॉप डाउन में किधर कॉपीज में कॉपी को हटा कूड़ा सिलेक्ट करो कूड़ा है ही नहीं कूड़ा इसमें। है ही नहीं कूड़ा कूड़ा इंस्टॉल लगेगा करना तेरे। पड़ेगा तेरे को शायद हाँ कूड़ा लगेगा ना ब्रो तेरे को डार्कनेट का पूरी लाइब्रेरी इंस्टॉल किया तू नहीं डार्कनेट नहीं कूड़ा का एक अलग से आता है देख पाइथन में वो इसके लिए ना जीपीयू इसके लिए सीयूडीएन उसका वर्जन और वो लगेगा फिर तेरे को पर ये देख ये ये चलेगा नहीं पहले जब टॉर्च विजन से कर रहा है क्या तू कोड बताएगा कोड में सीधा योलो का कोड डाउनलोड किया रुक जरा पहले ये कैंसिल होने दे इसका एक बार सेकंड, हाँ? सेटअप चेक करना ये कैंसिल भी नहीं हो रहा है देख अभी ब्रो तो और मॉनिटर यूज कर रहा है ना तो जीपीयू और खींचेगा इसलिए मैं अभी वो 30 60 पे भी रन करने को बोला था इसमें कूड़ा कोर्स रहेंगे ना 30 60 पे ये यूज नहीं किया 60 पे तेरा अरे, प्रोसेस मैनेजर चेंज कर टास्क मैनेजर चेक कर जीपी यूज कर कि सीपी यूज कर रहा है चेक कर अरे सीपी यूज कर रहा है 100% सीपी यूज किया हाँ Okay. इसका भी सीपी यूज कर रहा है टॉर्च विजन करके लाइब्रेरी आता ना हाँ। CPU ये install तेरे torch vision, it will install तेरे कूड़ा लैपटॉप में tool मक्स kit है करके, क्या हाँ एनाकोंडा से हाँ so that will configure your GPU with मतलब वो वर्जन होता है तो hardware जो तू dependency बोल है। रहा है ना टॉर्च विजन वो हाँ। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कूड़ा टूल किट है एक मिनट रुक इसके requirements.txt में गया तू ये क्यों कैंसिल नहीं हो रहा है ये पर ये टास्क मैनेजर से क्लिक कर एंटी टू पूरा मेमोरी फुल हो अरे भाई डिस्कॉर्ड चालू है वो भी तो गांडी मार रहा उसका अबे तो भी बेसिक्स देखते हैं ना लेट्स ट्राई इट ना देख वो कैंसिल हुआ आई थिंक सो भी कैंसिल हो बे कैंसिल वाले भी एक मिनट हाँ बॉयस मैं हेडफोन नहीं डाला ओके इसके requirements.txt में देखा टॉर्च विजन है ठीक है ये तो सब कमेंटेड है ना तो लॉगिंग अपने को लॉगिंग और एक्सपोर्ट विस्पोर्ट नहीं चाहिए ना अभी के लिए। हाँ ऊपर में और जैसे कूड़ा कूड़ा का नहीं इंस्टॉल है कूड़ा टूल किट करके आता है रुक जरा ब्रीफ खोलेंगे ट्रेन तो हुआ कूड़ा टूल किट पाइथन ये रन टाइम एपीआई इंस्टॉलेशन पिप इंस्टॉल कूड़ा पाइथन ट्राई करेंगे और देख उधर क्या कहते हैं फ्रॉम कोंडा सो तू कोंडा एनवायरनमेंट है नॉर्मल नहीं नॉर्मल पाइथन एनवायरनमेंट इसलिए मैं पिप इंस्टॉल कूड़ा ना कॉपी पेस्ट किया आई थिंक तब कोंडा से कुछ तो डिपेंडेंसी है ब्रो देख तो भी ट्राई करके माइट वर्क बट तू और कोड बता ब्रो एक बार कोड बता कोड कुछ नहीं है वैसे डायरेक्ट कमांड रन कर रहा हूँ हाँ, मैं तो train.py रन कर रहा है ना train.py इज डायरेक्टली ये किधर गया ये train.py फोल्डर में उसको खोल के बता .कूड़ा टॉर्च इंस्टॉल किया ना तो हाँ तो इधर एक होता है जो जीपीयू को लिस्ट करता है लेफ्ट माउस लेवल चेक कर वर्ल्ड साइज तो कोई समझेगा भी सर्च करो क्या जीपीयू को मैं हाँ इधर का जा 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 डिवाइसेस करके सर्च करेगा लिस्ट ऑफ डिवाइसेस इट विल शो इफ यू हैव मल्टीपल जीपीयूज ना
Let's find next. आराम से. Insufficient CUDA devices. We don't have CUDA. क्या बोला? CUDA is equal to device dot type not equal to CPU है. Go Not to line 107. इसके train.py का. 107 CUDA device type. Not It's not- equal to. CUDA is equals to device dot type is not equals to CPU. Maybe because we don't have CUDA cores in our system. But that cannot be the. No, we have 3 copy. CUDA cores है ही नहीं अपने पास. Okay, let's just check this. Brave. YOLO train not using GPU. Windows 10. That is why people prefer using Ubuntu for this. I have all environment where all DLL files and libraries set. I also have OpenCV installed on Python version is 3.7.4. DDP mode. एक मिनट रुक. Let's do one thing. We will install OpenCV. इसके अंदर OpenCV. हाँ? Oh, yo, finally something happening. Something is happening. At least train हो रहा है मेरा ये टाइम. Last time train ही नहीं हुआ. Okay. So now let's see कितना टाइम लगेगा. Mine took approximately 5 minutes. Okay, तुमको भी तुम वो डिटेक्शन का ट्राई किया तूने? नहीं किया मैंने अब तक वो ट्राई कर. डिटेक्शन में वैलिडेशन फोल्डर में इमेजेस कितने रखने हैं? कितने रखूं? डिटेक्शन में वैलिडेशन फोल्डर नहीं आएगा बे. ओके तो फिर डिटेक्शन के लिए पाथ कहां से आएगा? अरे वो ये चेक कर वो एनालिटिक्स विद्या में. आई एम सेंडिंग इट टू यू. वेट. नहीं है, देख रहा हूं मैं. ट्रेन योर ओन मॉडल हुआ. YOLO V5 इन्फरेंसिंग में जा. Inferencing, हाँ. So to test your model on testing data, you will have to use detect.py. उधर ही है क्या? detect.py. Okay, हाँ, okay, मिला. But where is my GPU? भाई मेरे को Intel और UHD क्यों बता रहा है? Okay, I had to scroll down. Wait. हाँ वो तो 0% chill कर रहा है 56 डिग्री में. बिल्कुल CPU intensive task है. नहीं ब्रो, दैट्स द प्रॉब्लम. इफ यू यूज GPU बड़ा सेटअप करना पड़ेगा. वो मेरे को नहीं करने का अभी. हाँ. ये व्हाट द फक. Should I use the same command? जो इसमें है दिया है इसने. हाँ सेम कमांड ही. Size 640. हाँ. ओके रखा. कूड़ा. Okay, let's try to run this thing now. मेरा इतना क्रैश हो रहा है पता है तेरे को. YOLO V5 L वापरा इसलिए लफड़ा हो रहा है. I think so S वापरेंगे. And we'll increase batch to 69 इसको. $63 डिग्री से हॉटस्पॉट पे मेरे 15 वॉट्स ड्रॉ कर रहा है. GPU वोल्टेज, CPU टेम्परेचर भाड़ में गया. एडवांस्ड वैलिडेशन सेंसर्स. GPU सिर्फ
ये टेस्ट डेटा तूने खुद से डाला है ना? It doesn't have a test data file, right? No, you have to Just create the that. folder में वो सेम पाथ एज दिस ये दे दे भाई, इमेजेस पाथ है ना तेरा ट्रेन में, वो सेम पाथ दे दे और ट्राई कर. जीपीयू लोड 11% ही है मेरे में. हाँ 11% ही है जीपीयू लोड मेरे इसके अंदर अभी तक. It's 40. Source. 896 कूड़ा कोर्स है इसके अंदर 1650 में. कूड़ा कोर्स है. Mobile version is 1024 CUDA cores. Okay, so we have CUDA cores. Weights का path is default. No, no. What is weights का path? Go to YOLO, go to runs. Okay. उसके अंदर ट्रेन रहेगा, ट्रेन के अंदर EXP फाइल क्रिएट हो रहेगा. उसमें weights है. उसमें वेट्स है, उसके अंदर best.pt का पाथ देना है तेरे को. Okay. Inverted commas में the path. ओके, डिवाइस 0 करके देना है क्या उसको? ओके नहीं, दैट इज डिवाइस 01. ओके दैट इज जस्ट सेइंग व्हिच डिवाइसेस टू यूज. अरे
You can also simply pass a followed by specific GPUs. For example, in the code below, we will use GPUs 2 and 3. Windows support design test Linux recommended batch must be a multiple number of GPUs. GPU 0 takes slightly more than GPU. It maintains EMA and is responsible for checkpointing. If you get runtime already, it could because you're running multiple during a time. To fix this, simply use different number of master code. Okay. So if I give अबे py, अच्छा गया रे, मस्त क्या ट्रेनिंग हो गया कि डिटेक्शन हो गया? डिटेक्शन भी हो गया. दिखा? So I will share my screen. I did one small tweak. मैं original classes जो है ना वो मैंने copy paste किया. Let me try to share my screen. Uh, नहीं है भाव. Watch stream. Nice. अच्छा हुआ तो. Yeah. So what I did ना, मेरा किधर है YAML file? ऊपर गया. Coco.yaml. So I had included the names of those things. Where That did is you the get one. this from? ये मैंने किधर तो उठाया. तो ये भेज दे मेरे को भी देखता है. Because of that. पर तूने टेक्स्ट फाइल में एडिट किया फिर? नहीं. That is the strange thing. Look, yeah, Coco 128 class name. So And then it used whatever is inbuilt. I think that is why it is doing that. Okay. I got it now. Maybe that is why it is not working. I sent it in general. हाँ मैं ये देखता हूँ. ये डाल के देख. I got it what you did. समझा मुझे क्या किया तूने. Okay. I got the point. Edit with notepad. क्या किया? अरे I think those names ना those names should be there in this thing. The YOLO case के अंदर जो names है it should correlate to that. That is why it is not working, bro. Let me go back here. YOLO v5 runs train का सब delete कर और retrain कर with YAML file. YAML file is saved and execute. You can stop sharing. नहीं. हाँ stop. Okay. और वो NC number of classes को भी change किया. हाँ, NC 80 करना है इसको. Okay, कार्तिक का. या वो मैंने YAML फाइल में क्लासेस जो मेरे इंडेक्स फाइल में थे ना वो डाले थे 45 0 1 2 3. पर जब एलेक्स ने क्या किया टेक्स्ट YAML फाइल में ये नेम्स डाले तब रन हुआ. पर टेक्स्ट फाइल में 45 55 है. ठीक है. किधर गया तो दिखाता हूँ. इसमें ऐसा दिया है. तो इंडेक्स है क्या वो? वही पता नहीं. इंडेक्स होना होगा. जीरो इज वो भी तो वो योलो का इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है क्या वो? नहीं वो जो लिस्ट है ना तू पर्सन एंड ऑल दैट सो दैट बिलोंग्स टू दिस इंडेक्स. पर मैं रहेगा. कितना है उसका साइज निकाल वो लिस्ट का 80 है. 80 है ना. सो दिस नंबर शुडंट गो बियॉन्ड 79. वो इंडेक्सिंग नंबर तो चेक कर. अगर इफ इट डजंट गो देन इट इज दैट ओनली. Okay, that is what was causing the issue there because it is not able to find the class only to correlate. ये ढूंढना मतलब बहुत मुश्किल है इसके अंदर. बराबर है वो 45 नाइफ है. नाइफ वही है वो ऑर्डर में ही है वो लिस्ट इसलिए वो ऑर्डर में ही है. बराबर बोल है ना. हाँ ऑर्डर में ही है वो ऑब्वियसली क्योंकि और क्या है हो सकता है ना उसका. बिकॉज सी हमने जब जो रेफरेंस लिंक लिया ना उसमें उसने क्या बोला तो क्लास का नेम डाल इधर. तो हमको लगा ये लोगों ने क्या किया है क्लास के नेम के बदले एक नंबर दिया है. हां नंबर इट विल डिटेक्ट एंड देन यू कैन रीमैप एंड कर सकते हैं. पर नंबर ही होता है मोस्टली. यू कैन नॉट सेंड टेक्स्ट इन ट्रेनिंग. यू कैन नॉट सेंड. यू हैव टू सेंड नंबर्स ओनली. तो मे बी दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. वो इंडेक्स कर रहा है. देखते हैं मैं वापस रीट्रेन कर. जीपीयू का हुआ सीन. नहीं जीपीयू का सीन नहीं. मेरे में 1020 को कूड़ा कोर्स है. मैंने वो चेक किया मेरे स्पेक्स पर इट इज नॉट यूजिंग जीपीयू. उसमें कूड़ा ही नहीं आ रहा है ब्रो. देख 13 से 12% यूज कर रहा है जीपीयू लोड.
दैट इज प्री लोड बिकॉज वो मॉनिटर पे कर रहा है, वो ओबीएस यूज कर रहा है उतना ही। तो एक ट्राई कर ब्रो, वो जो बोला ना अपने टास्क मैनेजर में, उधर ड्रॉप डाउन में कूड़ा करके स्पेशली आता नहीं है। हाँ वही, वो चेक किया, वही नहीं आ रहा है, वो है ही नहीं, वो दिखाई नहीं रहा है कूड़ा। वो आना चाहिए। जीपीयू में देख कूड़ा दिखाई नहीं रहा। इधर आता है वो कूड़ा में। 3D है क्या कूड़ा? नहीं नहीं 3D नहीं है। कूड़ा करके होता है स्पेशल। चलो खाने के लिए 3D में आ रहा होगा देख कुछ डेटा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ये वो थोड़ा यूज करते हैं। हाँ देख 3D यहाँ है ना, हाँ। यहाँ हो रहा है ना, और वीडियो एनकोड हो रहा है। दिस इज ओबीएस का थिंग। मॉनिटर नहीं होता नहीं ओबीएस एक वीडियो एनकोड करके भेज रहा है ना यूट्यूब को। वो चल रहा है क्या तेरा पीछे? हाँ। तो वही यूज कर रहा है ब्रो, ये 22%। हाँ तो वही बोल रहा ना, तो दैट मेन यूसेज इज दैट थिंग ओनली। मैं चेक करता हूँ अनेबल योलो कूड़ा चेक कर। नहीं अनेबल टू सी कूड़ा इन टास्क मैनेजर। लेट्स सी क्या होता है। तुम लोग खा लो, मैं खाता आता कूड़ा हूँ। इन जीपीयू डाल दो, जीपीयू। टास्क मैनेजर जीपीयू cannot monitor CUDA cores. I'm just interested in my case as able to in Windows 11, but it's gone at some point after in I basically sure I think CUDA option is not specifically shown and it's still monitor have recently developed a project. No. PD option didn't show anything. इसमें भी CUDA कोर्स दिखा नहीं रहा है देख। तेरा Windows 11? नहीं 10 है 10 है। It doesn't matter, इतना कुछ फर्क नहीं है। करा आलो चल दो। आलो तो गूगल करना डायरेक्ट येलो जीपीयू। योलो जीपीयू ये पाई इमेज सर्च है। येलो जीपीयू ट्रेनिंग करके ना। योलो जीपीयू ट्रेनिंग train online with 3 GPU darknet framework on NVIDIA GPU। तेरा येलो V5 मैं तो एक बार वो V3 पे ट्राई करूँ क्या मैं? रेपो ही टेक करेंगे तो कभी ना YAML फाइल से भी कॉन्फ़िगर करते हो डिवाइसेस को। हाँ तो एक बार वो भी मतलब कोड के अंदर एक बार देखा ना कि कैसे हो रहा है जीपीयू का यूसेज। कोड के अंदर क्या है? कूड़ा इज इक्वल टू डिवाइस डॉट टाइप नॉट इक्वल टू सीपीयू। हाँ इफ डिवाइस टाइप इज नॉट, अभी डिवाइस किधर है? डिवाइस सर्च कर ये वाला कीवर्ड। फाइंड नेक्स्ट ऊपर यार डिक्लेरेशन। हाँ ट्रेन को इनपुट है वन ऑफ द पैरामीटर। ट्रेन किधर कॉल हो रहा है देख। बराबर वो डैश डिवाइस 0 डालेगा तो शायद जीपीयू यूज होएगा। मैं वो ट्राई करता हूँ। डिवाइस ये डिवाइस देख डिवाइस और डिवाइस सिलेक्ट डिवाइस Option. डिवाइस और ओपीटी क्या है देख। ओपीटी किधर से डिक्लेयर हो रहा है? नहीं सिर्फ ओपीटी देख। हाँ ऊपर ही ना ये यामल होगा देख, पक्का बोल रहा हूँ। मेन को क्या पैरामीटर आ रहा है? ओपीटी मेन को कहाँ से कॉल हो रहा है वो देखिए। ये नहीं ये कौन? ओपीटी इधर डिक्लेयर हो रहा है ना। ओपीटी पार्सर डॉट नोन आर्गुमेंट्स एंड पार्सर ऊपर इधर जीपीयू होगा देख। डेटा इमेज साइज नो वैल कैश डिवाइस हाँ डिवाइस 0 करके हाइफन डिवाइस 0 करके और 0 1 2 3 और सीपीयू। हाँ इफ यू हैव मल्टीपल ओके यू हैव टू गिव इट एज डैश डैश डिवाइस। लास्ट को डैश डैश डिवाइस 0 करना है। अभी रन कर। और अभी इसका चेक करेंगे यूसेज, तो दिस शुड इंक्रीज। इनवैलिड कूलर डिवाइसेस 0 रिक्वेस्टेड यूज डिवाइस सीपीयू और पासवर्ड। वैलिड कूलर डिवाइसेस मे बी I'll change it to 1 and see। नहीं 0 इज डिफॉल्ट। 0 1 2 3 डाल के देखते क्या होता है। नहीं एक तो 1 ही डाल दो, सिर्फ 1 डाल। मोस्टली 0 होता है क्योंकि मेन इज 0 क्योंकि सीवी से भी कैमरा ओपन करता है यू पुट 0 राइट। हाँ वही नहीं हो रहा डिवाइस डिटेक्ट नहीं हो रहा। डिवाइस डिटेक्ट नहीं हो रहा। इनवैलिड कूड़ा टॉर्च से यूटिल है, टॉर्च से सिलेक्ट डिवाइसेस। ये एरर सर्च करो देखो बोलेगा कूड़ा का। नहीं इधर से कर, ये फाइल के इधर से कर। हाँ लेट्स सी। वो वाटर है बहुत ज्यादा आ गया गूगल का पॉपअप। फाइल का नाम होना चाहिए इनवैलिड कूड़ा डिवाइसेस। हाँ तो वो मैं वो कर लेता ना, मैं वो क्या टाइप करनेंगे ना।
Well, but if you just put the, it should tell us. 1 नहीं bro, 0 डाल, 0 डाल, 0 इसमें. You forgot to put equals to between the package and the version number according to Python installation page. Torch installation. Torch के 2 version है, एक with CPU build, एक with GPU build. ये डाल के देखो क्या So मैं if you install with GPU build, then only it will access. Okay, so let's. हाँ आता हूँ तुम जाओ, मेरे को ये रन करके देखने दे. One second बॉयज, मैं तुमको बोलता हूँ. Let's see. कार्तिक तू रन किया वो? ट्रेन हो रहा है, रिट्रेन हो रहा है. हाँ ठीक है, ट्रेन कर, उसके बाद डिटेक्ट कर. तेरे में डिटेक्ट हो मतलब डिटेक्शन चल रहा है. नाउ वील ट्राई टू यूज डू ट्रेनिंग एंड डिटेक्शन यूजिंग जीपीयू इंस्टेड ऑफ सीपीयू. एलेक्स तेरा भी 1650 नहीं था, 1080 है ना एलेक्स? कोडा कोर्स है कुछ 700, बट वो मेरे को भी सेम एरर आ रहा है. हाँ तो दैट्स व्हाट एक मैं ट्राई करता हूँ, रुको जरा. करेगा तो 0 मेरा वही है. और क्या है ये सब बराबर बता रहा है, बट So this link not if is telling that if you get that error saying that dash dash device 0 CUDA unavailable, right? Then they are saying ki install this. okay. रुक जा, मैं और एक चीज देख रहा हूँ. क्या वर्जन पूरा है टू चेक. ये गाना मस्त है भाई. ये हाँ. कौन सा गाना बज रहा है? How the fuck do I see which song is playing? टॉर्च नॉट कंपाइल्ड विद कोडा एनेबल्ड. ओके, तो टॉर्च को कैसे कंपाइल करे विद कोडा दिखता है. वो नीचे. ओके, तो जो एरर आया कि यू रेड दैट स्टैक ओवरफ्लो. हाँ वो पढ़ा, मैं कुछ ट्राई कर रहा है. क्या टॉर्च विद कोडा. Let me try to do what the second option said. Okay, so go to pytorch.com. Go to pytorch.org. Okay, then after going to pytorch.org, system details. Okay, go to system details. The fuck is this? Resources, features and capabilities. What the fuck, bro? Ecosystem docs, PyTorch. Oh, fuck, bro. How the fuck do I do that? Okay, you can. Oh, okay, we can try this. Okay, let me do Python. Import torch. Bro up. Okay, thank you. Print. Paste. Run. True. Okay, CUDA is available. So where CUDA is available. हाँ तो अभी डिवाइस 0 करके देख, तेरा रन होएगा. Okay. Device 0. इस बार हुआ आई थिंक डिटेक्ट.
कुछ तो वैल्यूज दिखा है ना तेरे को? हाँ हाँ एलेक्स 4 हुआ। persons 1 bus done 1 bottle 1 bowl 1 TV. The paging file is too full. The paging file is too small for the operation come to complete. Or one of its dependencies. Detect each Cannot create a file. The file already exists. Broken pipe error. भगवान इतना error आया मेरे को. इस बार हुआ detect like yeah each and every event. Perfect. ठीक है. Now we will. ठीक है. बाद में बैठ. GPU वाला मेरे को बाद में बोल. I have to go eat dinner now. Same here. तो वही GPU वाला बाद में करते हैं. पर मैं देखता हूँ. Detection हो रहा है ना. We are able to do it based using CPU. Yeah. That is very wrong because you should use GPU. You get better results. Performance. Yep. ठीक है. Alex. Okay. खाना खा के खेलते हैं फिर. खेलना खेलना तो खेलेंगे. 1 घंटा खेलेंगे. Couple of games. देखता हूँ मैं after my खाने का how do I feel. पहले मैं सो जाएगा. ठीक है. If you are sleeping, कल खेलते देखते हैं. ठीक है. Yes. चलो. जल्दी खा गया 1 घंटा खेल सकते तो बता, नहीं तो Yes. गुड नाइट. Yes. ठीक है, Yes. bye. Yes. Bye bye. Good night. Bye. Bye. Good night stream.